Hello everyone, this is Arushi Agrawal, your host to the world of travel and stories. And today we have Mr. Nirav Shah with us, who has lived through and through in the US and has done many tours for the last 10 years. Let's get into the conversation and hear his stories. हम जब भी यूएसए की बात करते हैं, there's always that mention of Big Apple that we cannot miss. Like सारे sitcom सब कुछ based out of Big Apple होते हैं. तो what do you have to say about that? You know, कोई सिटी में क्या ना वाइब होती है, मतलब एक अलग टाइप के सिटी होते हैं. जैसे हम जब बॉम्बे जाते हैं तब यू फील दैट ये कुछ सिटी अलग है यार. They just live differently. No matter what Bombay has gone through in the terms of all the kinds of ups and downs, it never ceases to surprise you. Yeah. Very very similar is New York. You know, हम ऐसे बोलते हैं कि न्यूयॉर्क 5 boroughs से बना हुआ है. Boroughs are kind of small islands basically. तो उसमें से सबसे फेमस है मैनहट्टन, जहाँ पे अपना वॉल स्ट्रीट वगैरह है. और मैनहट्टन भी डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में. डाउनटाउन जहाँ पे पूरा बिजनेस होता है, that is the finance capital center, where is Wall Street is there, where is New York Stock Exchange is there, all the fortune companies would be in-house would be there. Then we come up a little up on the island, that is the midtown. That's where all the entertainment happens. You call it about the Times Square, or you call it about the Broadway shows, you call about all the famous places to eat, everything's there. And then you move up still on the uptown, it's all about residential areas. And when we go and see places, we see the downtown and the midtown. We see that hustle and bustle on the New York Stock Exchange area, and we also see the entertainment on the Times Square. So Times Square बहुत सुना है, वो बस एक स्क्वायर नहीं है, मतलब वहाँ पे लोग इतना क्यों जाते हैं? यार एक्चुअली आरुषि, ये सवाल जो आपने पूछा ना, वो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि अपन न्यूयॉर्क आए तो टाइम स्क्वायर पे कब क्या करने का, यहाँ पे उतर गए तो मतलब वो एक आपका बात सही है, स्क्वायर ही है. लेकिन पीपल मिस आउट कि अगर आप टाइम स्क्वायर पे वहाँ पे एक स्टेयरकेस है, वहाँ वो नीचे, उसके नीचे ब्रॉडवे शोज की टिकट्स मिलती हैं. तो दे हैव क्रिएटेड अ स्टेयरकेस वेयर यू कैन सिट. तो अगर आप 1 घंटे बैठ लिए टाइम स्क्वायर पे, तो आपको कोई आदमी रोता हुआ दिखेगा, कोई आदमी हंसता हुआ दिखेगा. There would be a couple that's kissing. There would be a seniors who would be clicking their lifetime memories. There would be people who would be graduating and taking pictures over there. There would be people, there would be kids laughing. There would be, you know, somebody dressed as a Spider-Man, somebody dressed as something and telling you to click pictures. So much runs as emotions into that square that I don't call it a square, I call it a heartbeat. Wow. And when you know, are an avid traveler, and when you sit and see those emotions getting reflected in that space, you realize that humans are from so much different arena and so much different can happen. And that showcase to me is a true sense of heartbeat and true sense of Times Square feel. तो वो स्क्वायर ही है, लेकिन इट्स अ डिफरेंट फील. आई कांट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स, उसके लिए जाना पड़ेगा आपको. That's very beautiful. And what do you think keeps the spirit so high in New York? मतलब वहाँ पे सब कोई इतने energized, इतने you know always up to the mark रखते हैं. वो सिटी कभी गिव अप नहीं करता. वो I mean that city is so much full of energy that no matter what problems you throw at them, they will rise up and above. So आप ऐसा एक बड़ा एग्जाम्पल था हमारे लिए 9/11, right? When the Twin Towers were hit and the whole world was shocked at what happened. The city rose above. उस दिन जो हुआ, and then everybody came together to, you know, take the city forward. And today there are 2 huge memorials created at the place of those 2 towers. And a new building has come up, जो जिसे हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बोलते हैं अभी. And that's considered one of the most secure buildings in the world. But the key part was not they built something new. The key part was how they treasured the incident. The thing that they have created, the whole fountain as a memorial that they have created, उसके चारों साइड पे उन्होंने सभी लोगों के नाम लिखे हैं जो इस इंसिडेंट में दे पास्ड अवे.
So that tells you that no matter how grandeur the city is, no matter how next level achievements they are making, but yet the city has a next level sensitivity with which they approach any situation. ये आपने मुझे काफी हम्बल कर दिया है, ये तो मैं बहुत ही अच्छा लगा जान के. आपने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग सुना होगा. इट्स अ 100-story बिल्डिंग, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टेट टॉलेस्ट बिल्डिंग का खिताब उसको बहुत लंबे टाइम तक रहा था उसके पास. तो इमेजिन कीजिए वो 100 स्टोरी का बिल्डिंग 1930s में बनाया था उसने. तब हमको पता ही नहीं था 100 स्टोरी का बिल्डिंग कैसे बनता है, एंड दे क्रिएटेड दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर. तो ऐसा सोचो कि 1930 में 100 स्टोरी पॉसिबल था? आई डोंट थिंक सो पॉसिबल था. ये देन ऑल्सो दे डिड इट. और वो बिल्डिंग कितने सालों तक तो एम्प्टी स्टेट बिल्डिंग बुलाते थे लोग उसको. And then slowly, steadily, people started flocking, and today it is one of the most prominent buildings at a crossroads of 34th Street and 5th Avenue. And वो वाला जो बिल्डिंग है, वो एक सिंबल ऑफ प्राइड है फॉर इंजीनियर्स कि ये बिल्ड हो सका. और जब मैंने ये आपको स्ट्रीट और एवेन्यू का बात बताया, दैट इट्स एट अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्ट्रीट एंड एन एवेन्यू, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो एवेन्यू और स्ट्रीट के कॉर्नर पे है, वैसे ही स्ट्रीट्स एंड एवेन्यू रन थ्रू आउट मैनहट्टन. और दे डोंट हैव बिसाइड्स, कोई भी एड्रेस होता ना तो बिसाइड्स दिस, नियर दिस, ऐसा जो हमारे वहाँ पे होता है वैसा नहीं होता. दे हैव डिवाइज्ड अ वेरी सिंपल सिस्टम. वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड एवेन्यूज, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड स्ट्रीट्स. सो वन एवेन्यू से शुरू होके आगे जाता है और फर्स्ट स्ट्रीट से शुरू होके आगे जाता है. और कोई भी एड्रेस आता है तो इट्स एट अ कॉर्नर ऑफ अ एवेन्यू एंड अ स्ट्रीट, अ वेरी सिंपल वन लाइन एड्रेस. So, you know, why मैं ये बता रहा हूँ, because US सभी चीज़ को बहुत simple कर देता है. They don't make it complicated. So that's also something that we should think of. So after this great conversation, I am too pumped to go to the US. Stay tuned for many more countries on your way. Hit the bell icon to stay updated, and do not forget to like, share and subscribe.